Hi children, good morning. How you all are? I hope you all are fine. And today we are starting with use of may or might. जैसे हमने can और could का यूज़ किया था, can का यूज़ present tense में, could का यूज़ past tense में, इसी तरीके से may का यूज़ present tense में और might का यूज़ past tense में. We use may to suggest something that is possible but not certain. मे का यूज़ हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है. ही मे कम टू स्कूल टुडे, वो पक्का नहीं है. दे मे वांट टू गो टू द पार्क, दैट इज़ नॉट श्योर. वी यूज़ मे टू आस्क फॉर परमिशन इन द फॉर्मल और पोलाइट वे. मे आई कम इन, आस्किंग फॉर परमिशन. मे आई टेक द डॉग फॉर अ वॉक, अगेन परमिशन. वी यूज़ मे टू ग्रांट परमिशन इन द फॉर्मल और पोलाइट वे. वी यूज़ मे नॉट टू डिनाई समवन परमिशन इन द फॉर्मल और पोलाइट वे. You may come in, granting permission. You may not take the dog for a walk, refusing the permission. We use may to give blessings and best wishes. Read these sentences. May God bless you. May you be blessed with success. We use might or might not when we are not sure for something. Read these sentences. I might be late for my dance class today. Chetan might come to home tomorrow. The dog might not bite you if you pet it. The teacher might not give us permission to go home early. Now we will start exercise. Fill in the blanks with may not, might or might not. The tailor might not stitch the clothes soon. May luck be with you. You might have been hit by that speeding car. Might Riddhi go to the bank with me? Chirag, you might catch a cold if you get wet in the rain. You thought Gauri may be able to help him, but she couldn't. I might not attend your party as my relatives are coming over today. You may not be able to take a day off this week. There is too much work to complete. Now, uses of shall, should, will, would. शल और विल का यूज़ हम आई और विल के साथ करेंगे फ्यूचर टेंस में. ओके. शुड चाहिए. विल का पास्ट टेंस. वुड शल का पास्ट टेंस. शुड वेयर वी आर टेलिंग सम सजेशन. वी यूज़ बोथ शल एंड विल टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस. वी यूजुअली यूज़ द शल इन द फर्स्ट पर्सन एंड आई एंड वी टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस. आई शैल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस टुडे. We shall find the way to museum. Should is the condition form of shall. Shouldn't is the short form of should not. Now, I should have gone to see Vijay who is unwell. Krishna should have seen the speeding car. Okay. Now see how differences are there when we are using all these words. You should not have disrespect your mother. Fetch shouldn't have gone out when it was raining. We should go to give an opinion. Now read these sentences. You should not know the way to the park. You should know the way to park. My father should reach home by 6 o'clock. We use should to express a duty or an obligation. People should obey the law. We should listen to our parents. We use should to express a suggestion or give advice. Now read these sentences. You should keep yourself warm in the cold weather. You should study harder to do well in the test. We use will with he, she, it, they, you and singular and plural noun to express the future tense. Note, we sometimes use will with I and we to show certainty or determination. We will read this storybook aloud. Sumona will play the piano for assembly. We use will to express willingness. जब हमारी इच्छा होती है तब. Read these sentences. I will do this work for you. Pankaj will carry these bags for his mother. We use will to make a request to extend or invitation. Read this sentence. Will you lend me your ruler? Will you come to my house for dinner? Would is the conditional form of will. Mahesh said that he would help me. Dinesh said that he would be 10 years old this November.
नाउ वुड इज कंसिडर्ड पोलाइटर देन विल, जैसे शल और शुड में होता था, कैन या कुड में होता था, उसी तरह से वुड यू लैंड मी योर रेड कोट फॉर द पार्टी, वुड यू लैंड मी 100 रुपीज। वी यूज वुड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और प्रेफरेंस। नाउ रीड these sentences. The children would love to go for a picnic. I would like you to keep quiet and not make noise. Okay. From here we will start our next one. अब आपको क्या क्या लिखना है इसमें? पेज नंबर 62, पेज नंबर 63, पेज नंबर 64 और यहाँ तक। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट टर्न पे चालू करेंगे। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट टर्न पे चालू करेंगे। ओके, यहाँ से। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।